Hello everyone and very good afternoon. I hope you all are good. So today in the class to start with what nuclear physics. कल के क्लास में मैंने कंप्लीट किया that is your dual nature of radiation and matter. ठीक है वो कंप्लीट हुआ. Now we are to start with nuclear physics. So let's see what we have to study in nuclear physics first. So nuclear physics में we have to learn things about nucleus of atom. So basically we are going to explore कि atom के nucleus में क्या क्या होता है. Then we'll see mass energy relation and then nuclear binding energy and in the last we will see nuclear fission and fusion. ठीक है. Radioactivity is no longer there in the syllabus, so let's not include it here. Now, nucleus of atom. So here we will first learn about what discovery of neutron. So neutron का discovery किसने किया था? James Chadwick ने किया and how he did it actually. He bombarded beryllium nuclei with alpha particle और उन्होंने ये notice किया कि some neutral radiations were coming out. Done है. Until that time, only neutral radiation known was photon. Only neutral radiation known was photon. So James Chadwick thought like if this radiation coming out is photon or something else. So उन्होंने एक और स्टडी किया. उन्होंने एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन को लगाया and based on that principle he concluded that neutral radiation cannot be photon. So he was to conclusion that whatever neutral radiation is coming out is not photon. So at that point of time, he embarked on different sort of discovery where he said there exists different sort of neutral radiation also other than that of photon. और न्यूट्रल रेडिएशन को क्या बुलाया गया? उस न्यूट्रल रेडिएशन को बुलाया गया न्यूट्रॉन. ठीक है. So Chadwick assumed that radiation consists of a new type of neutral particles called neutron. So neutron was discovered by James Chadwick. How he discovered it? By bombarding beryllium nucleus with alpha particles. There he noticed some neutral particles radiation is coming out. By applying energy and momentum conservation principle, he deduced that neutral particle is not photon. So he gave it another name that is neutron. So neutron was discovered by. Okay, chalo. So we will see a bit about neutron. Neutron का mass क्या था? Mass of proton के so almost equal था. So mass of proton and mass of neutron we will write as same. ठीक है? And we already know mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg to some good approximation and mass of neutron भी देखो इसके ठीक है. So this is mass of neutron and since this mass is very small, it is to the it is as small as 10 to the power minus 27 kg. इसलिए we coined another unit of mass that is atomic mass unit, and in terms of that mass unit, mass of neutron is 1.00866 U. So you all must have studied in chemistry how we define one atomic mass unit, that is 1 U. Here also I will explain. Let's see. पहले हम देखते हैं न्यूट्रॉन क्या क्या डिस्कवरी हुआ. न्यूट्रॉन का मीन लाइफ इज 1000 सेकेंड. So on the average, it will exist for how many seconds? 1000 seconds. It is unstable outside the nucleus and it is stable inside the nucleus. Neutron. ठीक है. अब तो हमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ना नहीं है, so we don't have to discuss more about this thing, stability, why it is not stable, because we don't need to write those equations, radioactive equations. So let's include that. ठीक है. Atomic number and atomic mass. So atomic number सबको पता है, number of proton in the nucleus. So basically reading nucleus. So if you see nucleus, inside nucleus, if I'm saying this is nucleus, then inside nucleus there is proton and there is neutron. So atomic number is number of proton in the nucleus, which is characteristic of chemical element. You already know. Based on atomic number, we say this element different because
I mean, hydrogen, atomic number 1, helium 2. So different atomic number, different element, right? Mass is what? This is neutron plus proton. You already know, I don't need to emphasize this. Atomic mass, mass of single atom. So mass of neutron plus mass of proton, we can say. We are neglecting mass of electron here. I mean, when we talk about mass of single atom, atom के पास क्या क्या होता है? Nucleus होता है, and then there is electron also, electrons. So mass will be mass of proton plus mass of neutron plus mass of electron. But mass of proton and neutron is of range of 10 to the power minus 27 kg, and mass of electron is of the range 10 to the power minus 1 kg. So it is 10 to the power 6 times less. And that is why while doing the calculation of atomic mass, mass of electron we generally neglect. Okay, because it's 10 to the power 6 times smaller than that of proton and neutron mass. Okay, so that is why we will what will simply not make it count. Done it. Calculation में include नहीं करते हैं. Its unit is atomic mass unit. Unit mass को हम क्या बोलेंगे? One atomic mass unit. We will define it what it is. So atomic mass unit is defined as 1/12 of carbon-12 atom. You already must have studied carbon-12 is one isotope of carbon, और इसका 1/12 मास को ही हम 1 AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? If anyone is facing any issue, you can let me know through the section. ठीक है, डन है. ठीक है. So one U is mass of one carbon-12 atom divided by 12. So mass of one carbon-12 atom is this much. This divided by 12 will give us something of this range. Okay, and this is again, it seems like same as that of mass of proton and neutron. Done it? Now, how we represent element? We represent element like if element is X, then its atomic number at the bottom, mass number at the top, like this. आप लोगों को पता भी होगा. Gold, its atomic number 79, mass number 197. So Z is 79, and atomic number, that is number of proton plus number of neutron is how much? 197. So from here we can calculate number of neutron and so on. Done it? Z is atomic number, N is neutron number, and mass number will be equal to then Z plus N. This is a small thing we just need to have in our head. Now, what is isotope? You already know isotope means element which have same atomic number but different mass number. So if atomic number is same, then that element is the same element, because when atomic number changes, element changes. लेकिन यहाँ पे atomic number same है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन एक में मास नंबर 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है. सो एक का नाम हाइड्रोजन, दूसरे का ड्यूटेरियम, तीसरे का ट्रीटियम. बहुत ज्यादा सेम होगा क्योंकि तीनों के ही पास कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है? सिंगल नंबर ऑफ प्रोटॉन. डन है. सो आइसोटोप मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिजल्टिंग इन डिफरेंट मास नंबर. डन है. यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स. एंड दिस इज क्लोरीन. क्लोरीन का भी दो आइसोटोप होता है, 35 एंड 37. क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 17. ये सब हमारे लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वन सिग्निफिकेंट थिंग इज कि हाउ वी mass of isotope, I mean mass number of isotope. जैसे देखो यहाँ पे this chlorine has a mass of 35 unit. This chlorine has a mass of 37 unit. So what you will say about the mass of any random chlorine? So we take average. How we take average? So weighted average we take. Weighted average of the masses of different isotope is taken as atomic mass of the element. कैसे लेंगे वेटेड एवरेज? तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे, we will get to know which isotope exists in what percentage. Okay, so if you see chlorine 35 exists as 75.4%, and this chlorine 37 exists as this percentage. So how we will calculate weighted average? So weighted average will look like 75.4% into 35
चलो मैं दिखाती हूँ. सो दैट विल लुक लाइक 75.4 इंटू 35.98. ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये जो क्लोरीन इसका एग्जैक्ट मास नंबर जो होता है और मास यूनिट में अगर लिखोगे तो दैट विल बी 35.98 यू. In terms of u, not in terms of mass number, it is getting written because we are calculating weighted average of the mass. So 75.4 into 35.98 u प्लस 24.6, क्योंकि इस आइसोटोप का परसेंटेज कितना है 24.6, इसके पास मास नंबर 37 और उसको अगर करेस्पॉन्डिंग यूनिट में लिखोगे तो इट इज 36.98 यू. डन है. सो इट इज कमिंग एज दिस मच, दिस होल डिवाइडेड बाय 100. 100 क्यों ले रहे हो? क्योंकि कोई भी टोटल परसेंटेज को हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं. इस टोटल 100 75.4 is chlorine 35 and 24.6 is 37. Chlorine 37. Done it. So we have weighted average. It means कि first you will see कि 75.4% है 35 वाला, so that into mass plus percentage into mass divided by total percentage, that is 100. So that is how we calculate weighted average for the for calculation of atomic mass isotopes. ठीक है. So it somewhere if it comes in the question, you should have an idea of कि isotope का हम mass कैसे निकालते हैं. ठीक है. चलो, isobar is what? All nuclide with same mass number. So they will have different atomic number. जैसे यहाँ पे देख हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो दिस इज ट्रीटियम, राइट? 3 है इसका, इसके पास मास नंबर. एंड दिस इज हीलियम, इसके पास भी मास नंबर क्या है? 3 है. सो बोथ आर शेयरिंग द सेम n प्लस p का नंबर एंड दैट इज कॉल्ड आइसोबार. ठीक है. एंड व्हाट इज आइसोटोप? न्यूक्लियाइड विद न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक, जिसका न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा. दिस इज वेरी स्पेसिफिक, जिसका न्यूट्रॉन नंबर ओनली सेम होगा. सो यहाँ पे और मरकरी के केस में वी डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू हैव दिस टर्म क्लियर कि आइसोटोन होता क्या है अगर कहीं दिखता है तो. सो यहाँ तक काफी ज्यादा बेसिक चीजें थी, टर्म्स थे सारे जो कि तुम्हें पता होना चाहिए. नथिंग एज दैट इम्पोर्टेंट आई वुड से. नाउ द रियल थिंग विल स्टार्ट इज योर साइज ऑफ न्यूक्लियस. सो फ्रॉम हियर वी विल रीड न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है. सो बेसिकली अभी तक हमें याद क्या क्या याद हमें रखना है कि 1 U kg में कितना होता है. सो 1.66 समथिंग इंटू 10⁻⁻27 kg, ये याद रखना है. इसका बहुत ज्यादा आने वाला. ठीक है. चलो. सो न्यूक्लियस के साइज को एक्चुअली ऑब्टेन कैसे किया गया, हाउ इट वाज डन. सो आई हैव नॉट टॉट यू द फूड एक्सपेरिमेंट बट इट वाज done through that sort of approach itself. So what they did is, suppose this is your what, uh, will explain to you Rutherford का this experiment because यहाँ से क्वेश्चन आता है and that is why I thought to discuss. So यहाँ पे देखो, अगर गोल्ड क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में we took gold nucleus because gold heavy होता है. So if you are bombarding alpha particle on it, this thin gold foil will not get shaky or anything because it's heavy. Particle getting bombarded, thin sheet of it, क्योंकि गोल्ड तो डक्टाइल होता है. Make a thin sheet out of gold thing. Is my voice completely audible? Is there any network issue? If yes, you can let me know. I will change the network. Yes, can anyone let me know? Is my voice okay? Priya, Rohit. ओके हरीश, थैंक यू सो मच. सो यहाँ पे दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस. सो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, हेवी पॉजिटिव चार्ज होगा. एंड व्हाट वी आर डूइंग, अल्फा पार्टिकल वी आर टेकिंग अगेन. when you are reading modern physics वाला portion, dual nature of radiation, nucleus, atom, you should know alpha particle क्या है. So alpha particle क्या है? Helium nucleus है.
So helium nucleus means He2 plus, that is 2 proton, right? So it is also positively charged. Now, suppose what you are doing, you are giving it certain velocity to the alpha particle. So if it is gaining certain energy, because of that energy, it will start moving in this direction. Okay? It is moving in this direction. Now, as it will come close to the gold nucleus, since this is positively charged, it will feel repulsed from the gold nucleus. Done है? But still it will move ahead. क्यों? Because it has some kinetic energy. जैसे somebody is trying to stop you, but you have a high energy, so you will be able to restrict that opposition, right? And despite opposition, you will keep on moving ahead. So the same thing is happening here with the alpha particle. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल को हमने एनर्जी दी, सो रिपल्सन तो उसको यहाँ से फील हो रहा है, डन है, बट वो रिपल्सन को नलिफाई कर पा रहा है, डन है. सो एज इट इज कमिंग क्लोजर क्लोजर, इट विल इट एनर्जी विल डाई डाउन. आई मीन क्योंकि वो बहुत टाइम से उसको अपोज कर रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स को अपोज कर रहा है. सो दिस अल्फा इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, getting repulsive force being given by gold nucleus. Then देखो यहाँ पे, this is your gold nucleus, and what it will do, it will repel this alpha particle. So it will apply force on this alpha particle in this direction, right? And it has a velocity in this direction. So basically, on this alpha particle, force is acting in opposite to the velocity. It will accelerate. It will de-accelerate. So gradually its velocity is decreasing. What I want, that is what I want to say. So its kinetic energy is decreasing, and then a point will come at which its velocity will become zero, and that distance is called distance of closest approach. It cannot go beyond that because at this point its velocity has become zero. And through this strategy, we got to know that that point is, ये जो distance of closest approach है, scientists said that this distance, this particular distance is closest to the size of nucleus. ठीक है? So यहाँ पे देखो, distance of the minimum distance between alpha particle and center of nucleus just before it reflects back by 180 degree. So here what is happening? It is I mean, okay. So second, let me give you more insight into it. So what I told you is कि यहाँ पे तुम्हारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, यहाँ से पार्टिकल को हमने फेंका. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? चलो हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है. सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे? सो इनिशियली यू आर गिविंग इट सम एनर्जी. सो इन kinetic energy, say it is k, done. And when it will come closer to it, at the where its velocity will become zero, if velocity is zero, it won't move further ahead. So this is the distance of closest approach. This distance को तुम d मान लो. So you have to calculate it. How you will do the calculation? So now let's say this alpha particle and this gold nucleus are acting as a system. So if it is system, then force between gold nucleus and alpha particle is internal force, right? No external force is acting, and that force acting is electrostatic force. So basically mechanical energy will be conserved. That is initial kinetic plus potential energy equal to final kinetic energy plus potential energy. Final. Okay? So initially alpha particle and gold are at infinite separation. That will be given you in your question. So when it is at infinite separation, then initial potential energy को आप क्या लिखोगे? K charge on alpha particle, Q on alpha particle into Q on gold nucleus divided by infinite. That is zero. Initial potential energy of the system is zero. Initial kinetic energy is how much? K. Now let's talk about the final thing. So if you look at finally they are at what separation? For the distance, closest distance of approach की हम बात कर रहे हैं. So उस time पे कितना distance है दोनों के बीच का?
So potential energy finally is how much? K charge on alpha particle, Q charge on gold nucleus divided by T with negative, सॉरी, पॉजिटिव साइन, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, दोनों का चार्ज क्या है, पॉजिटिव. नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट दिस at the point of closest approach is zero. So total energy initial has to be equal to total energy final. So how you will calculate now uh, distance of closest approach? So total initial energy is K and total final energy is K Q alpha Q gold nucleus divided by T. So if K is given, and that is kinetic energy initial, then you will be able to calculate this distance of closest approach. Okay. So this is how we calculate distance of closest approach. But what will happen beyond the distance of closest approach? I mean, here it is, this alpha particle is getting stopped here, B equal to 0. But still this nucleus is applying force on it, right? And this force is in this direction. So now its velocity 0, force is acting in this direction. It will start moving in this direction. And that is when we say कि वो rebound कर गया. So this statement is written over here. Minimum distance between alpha particle and center of nucleus just before it reflect back by 180 degree. उस distance को हम क्या बोलते हैं? Distance of closest approach. So I feel like now you will be able to calculate it, because this is very important from the point of view of your examination. So I thought to give it to you. And from this experiment only, Rutherford was able to get an estimate of what will size of nucleus. And he said that size of nucleus is less than 10 to the power minus 14 meter. And that is why nowadays size of nucleus is of range of femtometer. And femtometer meaning 10 to the power minus 15 meter. इसको क्या बुलाते हैं? Femtometer. This is called what? Femtometer. So न्यूक्लियस का साइज किस रेंज का होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. कौन से एक्सपेरिमेंट से आया? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से. और इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो आई फील यू पीपल विल बी एबल टू डू इट. किसी को डाउट है? इफ यू हैव यू कैन लेट मी नो. किसी को डाउट है? एनीवन? मधुकर, हरीश, स्नेहा? हाँ नहीं है, चलो ठीक है. नोबडी? ओके ग्रेट. क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है? Do more question from this person. This is my request. Please everyone get involved in doing more question. This is very important that will solve more PYQs. ठीक है? PYQ means previous year question. There is this thing, radius of nucleus mass number से कैसे related? So radius of nucleus is R naught A का power 1 by 3. So if it is given that there is a nucleus of mass number A, then what will be its nuclear size? So you can easily calculate nuclear size by using this formula, where R naught is what? 0.2 femtometer. ठीक है? And A is what? Mass number. Done. So now there is one very important thing, is density of nucleus depends on its mass number or not. ठीक है? Density of nucleus. So if you are talking about a nucleus, radius is R, its density you will write at what? Mass by volume. ऐसे ही डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है? सो मास को मास नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर. आर क्या लिखोगे? आर नॉट ए का पावर 1/3 का क्यूब. सो इफ यू आर गोइंग दिस, व्हाट यू विल गेट हियर? ए बाई 4/3 पाई एंड दिस इज आर नॉट का क्यूब ए. सो ए कट है ना? सो डेंसिटी क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है. डन है. सो न्यूक्लियस तुम हाइड्रोजन का ले लो या गोल्ड का ले लो, वो उतनी ही डेंस है. ठीक है? ऐसा 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 दिख रहा है इक्वेशन से. वो क्या है? उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या है? डेंस है. डन है. सो यहाँ पे R equal to this, so volume will be equal to this much, and if volume is this much, volume is
proportional to A, and R is directly proportional to what? A by 3. So V is directly proportional to A. अभी अभी मिला. So density of nucleus is independent of mass number A. क्योंकि density is your mass by volume. And mass is proportional to A, volume is proportional to A. So it is not dependent on A. It is independent. ठीक है? चलो. And density of nuclear अप्रोक्सीमेटली इतना, क्योंकि दैट वैल्यू इज कमिंग एज ए सर्टेन कांस्टेंट, है ना. वो वैल्यू हमें कांस्टेंट आया है. कितना कांस्टेंट आया? देखो डेंसिटी का वैल्यू आया 3/4 पाई आर नॉट क्यूब. 3 is a constant, 4 is constant, pi is constant, r naught is constant. So basically density is constant. और उसका वैल्यू किस रेंज में है? That is of the range of 10 to the power 70 kg. Oh my god, this is too dense, है ना, बहुत dense है. Done. Now this is the important thing. Now starting mass energy relation. So आइंस्टीन का एक उन्होंने ये कहा कि जो मास है ना उसको भी we can convert it into energy also. Done है. We won't go further into explanation because it's not required. We just need the equation. So he said if there is mass m, then we can convert it into energy equivalent to how much? Is equal to mc square. ठीक है. Done it. Where c is what? C is your speed of light. So mass m can be converted into energy equivalent to that mass into speed of light का square. This was given by Einstein. So this is the important relation. जिस रिलेशन को हम आगे क्या करेंगे, काफी ज्यादा यूज करेंगे. JNV Mehsana, I missed you people so much. Where were you? Also Priya, you came after long time. Pragati, क्या हुआ सबको? I'm taking class from last 3 days. I mean, I completed so many things. You people were not there. I don't know why. You were not aware of the class? Was it the case? Okay. No reply. मन करे तो बोल लेना. चलो, so this is speed of light. Done है. अब देखो एक चीज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. So let's create the background of it. Suppose कर लो we are talking about oxygen nucleus. We are talking about what? Oxygen nucleus. So everyone knows about it. Oxygen के पास क्या होता है? Okay. Sneha, which class? You are from Hyderabad region, I guess. It's fine for you. Obviously, you will attend each class. Yeah, yeah. I was not asking from you actually. I know you. I was asking from Priya and all. They are from Pune region. Pragati, Mehsana and all. ठीक है, कोई नहीं. But thank you for the reply. है ना, इतनी कटसी होनी चाहिए यार. If teacher is asking, you should reply. But I don't know क्यों नहीं बोलते तुम लोग. कुछ तो प्रॉब्लम. I know. So we are talking about oxygen nucleus. If you talk about oxygen, oxygen के nucleus में क्या होता है? 8 proton, 8 neutron, and the mass number how much? 16. We already know this. So if we talk about mass of nucleus, अगर मुझसे पूछे कि mass of nucleus क्या है, then you will say that mass of 8 proton plus mass of 8 neutron. यही कहोगे ना? So that done here. 8 neutron का mass of 1 neutron is this much u. We will deal with atomic mass unit. So this much. Mass of 8 proton, how much? This much. Also mass of electron we are including. Its mass will be very less in comparison to that of proton and neutron. But still we are in. ठीक है. So यहाँ पे mass of 8 इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड हुआ है. ठीक है. सो एग्जैक्ट वेट हमें क्या मिलना चाहिए? इन तीनों का सम. तीनों को जब हम सम करेंगे तो हमें कुछ इतना मिलेगा. सो थेरेटिकली by looking at the theory, by looking at 8 न्यूट्रॉन का मास होता है, we are calculating mass of oxygen nucleus and we are getting that mass of oxygen nucleus is 16
12744 U, ठीक है। और फिर हमने क्या किया ना, उसके बाद वी डिड वन मोर थिंग एंड have a mass measuring device. Obviously we have to measure a very small mass. तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर करके है जहाँ पे we can measure small mass, ठीक है। So what we did is we measured mass of oxygen nucleus with the help of a spectrometer, and our observation was very different from that of theoretical calculation. So what was the observation we got? हमें मिला कि mass oxygen nucleus का इतना है, इतना नहीं है। So this was the theoretical mass, है ना, थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, एंड दिस इज एक्चुअल मास जिसको हमने मेजर करके पाया। सो दिस इज एक्चुअल मास एंड दिस इज theoretical. So why there is difference? Now this is the question, and इसी डिफरेंस को हम बुलाते हैं मास डिफेक्ट। तो देखो मैं डिफरेंस बताती हूँ, डिफरेंस क्यों हुआ। See here, you have 8 proton, ठीक है, you have 8 neutron and we have 8 electron. When they are not making oxygen atom, then they are far apart, ठीक है। 8 proton अलग है, 8 neutron अलग है, 8 electron अलग है, all are not interacting with each other because they are not the part of oxygen atom. उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों पास आए, they came together and they formed one oxygen atom. So when they formed one oxygen atom, what happened? न्यूक्लियस जो होता है, इलेक्ट्रॉन तो चला ऑर्बिट्स में, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड देन 6 सेकेंड ऑर्बिट में, राइट। न्यूक्लियस में क्या हुआ, 8 प्रोटॉन गया और न्यूट्रॉन गया, और न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर के रेंज में। सो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन काफी क्लोज स्पेस में आए, काफी पास पास आए। और अभी न्यू फोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कवर, हमने ये देखा है कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोन्स हैं, एक टर्म और है दैट इज योर न्यूक्लियोन्स। सो न्यूक्लियोन्स हम किसको कहते हैं, जो भी न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि प्रोटॉन को बुला सकते हैं, न्यूट्रॉन को बुला सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन ये है कि न्यूक्लियोन्स के बीच में एक फोर्स लगता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन तो चार्ज नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग सकता। हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। तो क्या सिर्फ तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, मैं दोनों ही, तुम लोग प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि पता है यहीं पे सारी थ्योरी है, प्लीज गौर करके सुनना, ना समझ में आए तो बताना। नाउ आई एम टेलिंग की लेट्स फॉरगेट न्यूक्लियर फोर्स, लेट्स फोकस ऑन वॉट एवर फोर्स वी नो बाय दिस डे। तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहाँ पे 8 प्रोटोन है, अब देखो 8 प्रोटोन के बीच में लगेगा repulsive force, and according to that repulsive force 8 प्रोटॉन कभी भी 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में नहीं रह सकता, क्योंकि repulsive force in between these 8 protons, right? So they will try to go away, they cannot be kept inside such a small, but ये है ना, लेकिन है, फैक्ट तो ये है। So scientists came to conclusion that there is one another and more stronger attractive force which is called nuclear force, then and nuclear force operates between nucleons, यानी कि प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। देन अब इस अट्रैक्टिव की वजह से ये मास के डिफरेंस का क्या रिलेशन, तो फिजिक्स में देयर इज वन कॉमन टर्म दैट इज कॉल्ड कि जैसे तुम ऐसे भी ऐसे इस चीज, suppose you have one positive charge and one negative charge. So when they are kept at separation r, this system of charge, positive, negative, has much energy, potential energy होता है कितना, negative है, k q by r. So energy is negative. Then why energy negative here? तुम कहोगे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए, तो हाँ सही है, लेकिन इसको दूसरे तरह से देखने का तरीका ये है क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्ट फोर्स लग रहा है, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। देन है फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग ये, व्हेन एनीथिंग हैज लेस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी,
दैट इज मोर स्टेबल। क्योंकि देखो, अगर तुम ज्यादा एनर्जेटिक हो तो तुम आई मीन यू आर लेस स्टेबल, राइट? तुम तोड़ फोड़ करोगे, के अंदर गुस्सा आएगा, मे बी, मतलब ये काफी ज्यादा नेचुरल नहीं है कहना। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचो कि सपोज कर लो, एक कार है जो कि 120 स्पीड से जा रही है और अचानक वो ऑफ द ट्रैक चली गई, तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा कॉज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। डन है। सो वो लेस, और सॉरी, या लेस स्टेबल है। लेकिन जिसकी एनर्जी कम है वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और नेचर में कोई भी चीज मोर स्टेबल हो सकता है। डन है। और इसीलिए ये 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन साथ आए टू मेक ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि तो न्यूक्लियस बनाया, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिससे इनकी एनर्जी काफी कम हो गई। डन है। सो दे आर स्टेबल। Again, between electron and proton, attractive force will act. Again, that is reducing the energy of overall system. So that is why it is getting formed. तुम कहोगे मैम मास का क्या रिलेशन है? सो मास का रिलेशन यही है, अब ध्यान से देखो। 8 प्रोटॉन जब अलग अलग था, 8 न्यूट्रॉन अलग अलग था, 8 इलेक्ट्रॉन अलग, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन दिस थ्री आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एटम, क्योंकि सिंगल एटम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा लगता है। सो इसकी एनर्जी ज्यादा थी और इसका एनर्जी क्या था? कम है ना? जब एटम बन गया तो एनर्जी। तो मुझे ये बताओ, जब 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या थे? इंफिनिटी पे थे, एंड नाउ कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ एटम, ऑक्सीजन एटम। तो ये एटम बन गया। तो यहाँ पे एनर्जी क्या था? मोर। यहाँ पे एनर्जी क्या है? लेस। यानी कि इस ट्रांजिशन में क्या हुआ होगा? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। सो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज? सो एनर्जी इज गेटिंग रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मास। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा, मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड कितना एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है वो? कितना उसका इक्विवेलेंट एनर्जी होगा? m × c²। सो हियर when they are infinite separation, their mass is this much, that theoretical mass. And when they are forming nuclear oxygen atom, their mass is this. So there is a mass difference, and that mass difference is called mass defect. And that mass defect का जो energy equivalent होगा will be equal to delta. So in all the nucleus formation there is mass difference, क्योंकि सारे न्यूक्लियस बना है, स्टेबल हुआ है। एंड इन दिस स्टेबिलिटी का फंडा व्हाट इज हैपनिंग? एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ मास। डन है। सो लेट्स सी नाउ। मास डिफेक्ट होगा तुम्हारा, मास डिफेक्ट होगा तुम्हारा थ्योरेटिकल मास माइनस व्हाट? एक्चुअल। ठीक है, ये करेंगे हम। डन है। अब थ्योरेटिकल मास में देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया। डन है। प्रीवियस एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन को लिया था, बट नाउ वी आर नेग्लेक्टिंग इट क्योंकि उसका मास 10⁶ टाइम्स लेस होता है। तो हमें नेग्लेक्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डन है। सो वी विल नेग्लेक्ट। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन ऐसा है कि एक एटम है, जो कि तुम्हारा क्या है? सपोज कर लो एक्स एटम है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर। तो क्या होगा? व्हाट विल बी द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस? So it has Z number of proton, so Z into mass of proton. And how many number of neutron? A minus Z number of neutron, so mass of neutron. So this is going to be the theoretical mass, and that is written over here. And this M is what? Actual mass, जो कि तो में दिया रहेगा। ठीक है। So this is this. Now in the previous example that we have taken, this is the theoretical mass, this is the mass, and mass defect is this. ठीक है, ये है तुम्हारा मास डिफेक्ट। So what is nuclear binding energy? How much in the formation of oxygen nucleus, how much energy is getting released? So that is your nuclear binding energy. कहने का मतलब कि न्यूक्लियस को बाइंड करने में, in forming nucleus, how much energy is released? That is nuclear binding energy. So this energy released, जिसको हम EB से इंडिकेट करेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, दिस इज इक्वल टू मास डिफेक्ट
टू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। सो अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल लूं तो मैं कितना लिखूंगी, मैं लिखूंगी 0.13691, 0.13691, राइट, सॉरी, 691 into, and this is in atomic mass unit, always remember. So इसको हम क्या कर सकते हैं, to convert it into kg for proper unit, और इसको अगर करेंगे तो 10⁻⁻27 के रेंज में जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, इंटू सी का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा बताओ, 9 × 10⁻16। सो अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में बोलूं तो कितना दिख रहा है मुझे, ये है 16, सो दिस इज 10⁻⁻11 समथिंग, ठीक है। सो if we are going to write it in terms of joule, then this energy is very less, 10⁻⁻11 के रेंज में, and that is why we will deal with it in terms of इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सो वी विल डील विथ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ओके, आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, sorry everyone. So 1 electron volt is equal to how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. ठीक है, so we can convert it. I mean, this much joule is 1 electron volt. So 1 joule is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. And if you will convert 10 to the power minus 11 joule into electron volt, so this will become of how much range, 10 to the power 7 electron volt. So we can say 10 into 10 to the power 6 electron volt, which is mega electron volt. Done it? And that is why we said binding energy जो होता है वो किस रेंज में होता है, in the range of MeV, that is mega electron volt. ठीक है, डन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं यहाँ पे कैलकुलेट दे दूं, ईज ऑफ कैलकुलेशन, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU या 1 U को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 1 AMU इंटू सी स्क्वायर करेंगे, है ना, एंड वी विल कन्वर्ट AMU टू kg, डन है। एंड इन टर्म्स ऑफ मेव वी विल गेट 931 मेव। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि देखो जो हमारा मास डिफेक्ट आए, प्रीवियस केस में जाओ, मास डिफेक्ट क्या है, समथिंग यू है, डन, एंड यू ऑलरेडी नो 1 U इज इक्वल टू 931 मेव। सो अगर इस डेल्टा एम को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, सो एनर्जी कितना लिख दोगे, 0.13691 इंटू 931 मेव। So this is EG conversion. Okay. So 1 MU is equivalent to how much energy? 931 MU. And in nuclear binding energy, how much range of energy getting released? Mega electron volt. ठीक है. So यहाँ पे अगर इस डेल्टा M को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, that is binding energy अगर निकालनी है तो this into you will do 931. Done. And this will come in the unit of mega electron volt. I know this calculation is lengthy a bit, but करना पड़ेगा, डन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। इतना इजी हो सकता है, बट और इजी कैसे करोगे, यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन। नाउ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक
टर्म है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट नाउ वी हैव सीन oxygen nucleus, right? So how many nucleons it has? If I talk about oxygen, then how many nucleons it has? It has 16 nucleons. Nucleons means whatever is inside the nucleus. Proton, 8 neutron. So binding energy per nucleon is indicated by letter EBN, and this is written as binding energy per nucleons. यानी कि binding energy divided by number of nucleons. Okay. So in this case, if you have to calculate for the case of oxygen, so 0.13661 into 931 divided by 16 MeV. This will be your EBM. Okay. So this is binding energy per nucleon. We have a graph which we have to study actually in detail. So this is graph of EBN versus mass number. Done it? This graph is so common. So many questions come from here. So if you look at this graph, you can see graph is looking something like this. And then it is decreasing. So binding energy per nucleon is what? It's a very small light nuclei. You can see here. Because here the mass number of this is very small. This is also small. This is also small. Just see here, for this mass number, binding energy per nucleon is this much small. Done it? And as mass number is increasing over here, binding energy per nucleon is larger. And for here, it is also large. But again, when mass number is so much high, then also what is happening? Binding energy is decreasing per nucleon, right? So, यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? पहला कंक्लूजन है कि EBN जो है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट है फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर 30 से 70 तक। सो इस रीजन में अगर तुम ध्यान से देख, यहाँ तक हमारा क्या दिख रहा है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है ग्राफ, यानी कि EBN इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर मास नंबर ranging from 30 to 70. And second observation is that binding energy per nucleon is smaller for both smaller and heavy nuclei. Heavy nuclei के भी binding energy घटा है और smaller nuclei के लिए भी binding energy कम है. Now we will explore the reason why this is happening. I mean, we have got the observation by looking at the graph. Now we will explain one by one each of these things. Maximum binding energy per nucleon is here for which one? For iron, for Fe. And this is how much? This is 8.75 MeV. For iron, the maximum. That we can notice here. यहाँ पे देख लो, इसके लिए तुम्हारा क्या है? Binding energy per nucleon सबसे ज्यादा है, 8.75 MeV. So now we are going to explain. So if I explain it to you, देखो, मैंने पहले जो भी explain किया वही काम आएगा. Let's talk about the light nuclei. So light nuclei में क्या है? Simple है. If you talk about light nuclei like hydrogen, helium को मैं लेके चलती हूँ. So helium में क्या होता है? 2, 4 होता है ना? हाँ, है ना? It has how many number of nucleons? 4 number of nucleons. So proton है, neutron है, neutron, है ना? So how much nuclear force is acting? Nuclear force is acting between 4 nucleons. डन है? सो उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 4 न्यूक्लियॉन्स है. As you will increase the mass number, I mean if you are adding more number of neutron and proton, suppose अब मैंने 4 कर दिया और ये 4 कर दिया, so definitely 8 nucleons are there. Now there will be more nuclear force acting, and more nuclear force means more attractive force. More attractive force meaning more negative energy, and more negative energy means more binding energy. Binding energy is what? Energy that is getting released in the formation of nucleus. Done it? So for lighter nuclei, basically EBN is why is smaller because there is there are small number of what? Nucleons, and so not proper nuclear force is acting, not that much, little bit.
and that is why little binding energy. Then, so, but the question is कि why nuclear binding energy is constant for A30 to 70? This is a question. Why it is constant? So, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये रीजन ये है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारा जो सारे वो सारे ऑब्जर्वेशन से आ रहे हैं. साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि 30 से 70 के रेंज में बाइंडिंग एनर्जी इज कांस्टेंट. सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन दे आर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है. डन. और कितना शॉर्ट रेंज होता है, आई मीन आई विल शो यू द ग्राफ लेटर. सम फेम्टोमीटर के अंदर ही होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि सपोज मैंने 30 का एग्जाम्पल दिया, 30 का. सो 30 न्यूक्लियॉन्स इतने एरिया में थे, जो अभी रेड मैंने बनाया है इसके अंदर कितने थे, 30 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन थे. डन है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मास नंबर 40. सो मास नंबर 40 के लिए एक्स्ट्रा एरिया आएगा. इस रीजन में सपोज तुम्हारे 10 प्रोटॉन्स, 10 न्यूक्लियॉन्स और इस रीजन में गए. डन है. So basically, these 30 neutron plus proton will not be able to interact with these 10 extra nucleons getting added. क्यों? क्योंकि इनके बीच का distance क्या हो रहा है, बढ़. And if distance is greater than a certain minimum distance, then nuclear force will not act. Nuclear force is a short range force. अगर मैं तुम्हें कहूँ NCERT में है, देखो यहाँ पे. So if you look at this graph here, this is distance. ये ग्राफ किसके किसके बीच का है, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स के बीच का. तो तुम देखो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन 3 femtometer, potential energy is 0, and when it is decreasing from 3 femtometer to 2, potential energy has decreased, some negative. Again from 2, potential energy has become more negative, and at R is equal to R naught, which is equal to 0.8 femtometer. At the potential energy is minimum. Done it. So if nucleons are in the range of 0.8 femtometer, then nuclear force will be the strongest felt. Okay. And if number of nucleons are increasing so much that distance between nucleons are getting increased more than that of 0.8 femtometer, of the range of 1 femtometer, 2 femtometer, 3 femtometer, then what will happen? Not a strong attractive force will act, and hence not that much I mean binding energy will get released. Because less attractive force means less stable, means less energy is getting released in its formation, right? And that is why force binding energy is constant from mass number 30 to 70. I will take forward explanation in the next class. ठीक है. So next class में हमारा target होगा to explain this, to understand more the nature of nuclear force, and then discuss nuclear fission and fusion. Done. So we will do that into क्लास. और आज की क्लास में मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सारा दे दिया है. सो कल का क्लास थोड़ा जल्दी होगा, तो वी विल डू सम क्वेश्चंस. ठीक है. एनीवन एनी डाउट? किसी के पास कोई डाउट है? इफ नॉट देन प्लीज, डाउट है सकते हो. और क्या, हाँ फीडबैक फॉर्म को फिल कर सकते हो, नहीं कर दो तो बेहतर होगा. ठीक. चलो, दैट इज ग्रेट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू स्नेहा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कीप रीडिंग. ठीक है. कीप सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एग्जाम्स आर क्लोजर, सो डू सॉल्व मोर नंबर ऑफ PYQs. ठीक है. From these portions, questions should not be left, I mean in the examination, क्योंकि these are very theoretical portion. If numericals come, then also some definite I mean there are some sort of question that always comes, right? So you just have to do some questions from this portion, some PQ, and then you will feel so much confidence, or so much confident you will feel.
ठीक है? So keep solving more number of questions. Take care of yourself. Let's meet tomorrow again. ठीक है? Bye bye. Take care everyone. Thank you for your feedback. Thank you so much.